Hello, dear students. Welcome back to the second part of the poem A Psalm of Life written by S.W. Longfellow. In our first class, we have discussed the first three stanzas of the poem ending with the line, "But to act that is tomorrow finds us farther than today." Okay, that means in the first class, we found out what is the true, the real aim of life. According to the poet Longfellow, the real aim of life is not enjoyment or not feeling sorry. Then what is that? The real aim of life is to act that is tomorrow finds us farther than today. And if it is the real aim of life to improve our living standards, different activities, our performances, our achievements, better and better every day, how can that betterment be possible? जदि जीवन वास्तव लक्ष्य सुख किंबा दुख भोग करवा नुहे, निरवच्छिन्न कर्म करवा एवं प्रत्येक आसंता काली आज ठारू टिके उन्नत हब, दैट मीन्स देयर मस्ट बी स्टडी इम्प्रूवमेंट इन आवर लिविंग. हाउ कैन वी, क्वेश्चन arises, हाउ कैन वी ब्रिंग अबाउट ए स्टडी इम्प्रूवमेंट इन आवर लाइव्स? किपरि भाव रे आमे आमर जीवन रे क्रमागत विकास उन्नति आनी परिबा. नाउ फॉर दैट मैटर we have to keep in mind two things. What are they? Now come to the fourth stanza, where we will find out what are to be kept in mind. आमे जेते स्टांजा 4 पढ़िबा आमे जानि परिबा को जिनिस गुडी को आम मन भीतर आमे धारण कले कोउटा को सदा सर्वदा मने रखिले आमर स्टडी इम्प्रूवमेंट हो पारिबो. नाउ लेट मी रीड द लाइन. Art is long and time is fleeting. Very important. Two things. Time is fleeting. Fleeting means passing away very speedily. क्षिप्र गति रे द्रुत गति रे अतिबाहित हो जिबा. Time and tide waits for none. आमे जानि छथि समय एवं जुहार काहारी अपेक्षा करे नाही. Time has wings. It flies away. समय सते जेमि तार डेणा अछि से क्षिप्र गति रे अतिबाहित हो जाए. देयर इज नो रिपीटेशन ऑफ टाइम. समय के पुनरावृत्ति नहीं. जो दिन, जो तारीख, जो घंटा, जो सेकेंड अतिबाहित होइछि से आ सेकेंड आसीबो नाही. टाइम इज रनिंग अवे. टाइम नेवर टैरीज. टाइम नेवर वेट्स फॉर एनीवन. And so also art is long. What is long? One is long lasting, one is durable. What is that? Art. Art means creating something beautiful, something durable, something long lasting, some great achievements, great monuments, maybe in the form of drawing art, sculpture, in different shapes of writings, etc., paintings, etc. आमे आर्ट इज लॉन्ग जो कहते कला दीर्घस्थायी. कला हुए तो स्थापत्य बुझे पारे, भास्कर्य बुझे पारे, कौन सी चित्रांकन को बुझे पारे, कौन सी कविता गल्प लेखिया को बुझे पारे, सौंदर्य जिनिस को सृष्टि करवा. तेणु जोड़ा आम कहुचे ब्यूटी इज ट्रुथ एंड ट्रुथ ब्यूटी. व्हाट एवर इज ब्यूटीफुल दैट इज ट्रू. Here we have to keep in mind that while working hard for steady improvement, steady betterment, we have to keep in mind what to create, what to do. हमें कौन करिबा जहाँद्वारा कि आमर क्रमश विकास हम. आमको मन रखा पड़ो जे समय द्रुत गति अतिबाहित हो जाऊँगी, समय क्षिप्र गति चली जाऊँगी, किंतु से कम समय भितर द टाइम व्हिच इज इन आवर क्लच से कम समय भितर आम कौन करवा
we have to create something beautiful, something long lasting. एमिति किसी सृष्टि करिया पड़िबो जोरा कि चिर सुंदर हेइथिबो, चिर दिन रही पारुथिबो, दीर्घस्थायी हेइ पारुथिबो। आउ कोन मन रखिबा, and our hearts though stout and brave still like muffled drums are beating funeral marches to the grave. One thing we have to keep in mind, art is long. The artist may die, but the piece of art outlives the artist. जड़े कलाकार मरी जाई पारे किंतु तार कलाकृति कलाकार मला परे मध्य स्थिर रही जाए। And we intend to do something permanent. We want to do something beautiful, something to be appreciated, and at the same time we have to keep in mind about the transience of things. आमको मन भीतर रखा पड़ो कौटा क्षणस्थायी समय तो चली आउ कौन ना वी आर ऑल्सो नॉट परमानेंट, वी आर mortals, we are subject to death and decay. According to the poet, our hearts, we may boast, we may take pride that our hearts are very strong, our hearts have no defect, very powerful, we are robust, we are strong, we are very courageous, we are very brave. Whatever may be the case, our hearts like muffled drums. You see, here like muffled drums, hearts are compared with muffled drums. You see, drums covered with cloth, that is called muffled drum. एठी कवि आमनकर हृदय को कपड़ा द्वारा आच्छादित गोटे ड्रम सहित तुलना करिसेंती। And how are they equal to each other? How do they appear similar to each other? You see, when we are talking about covering a cloth, covering a drum with the help of a cloth, and what is the cloth here that covers the heart? We have a natural clothing, natural coverage. आम समस्तंकर we are not born naked. आमे कई लंगड़ा ही जन्म ही नांती. We are given a natural dress, a natural clothing. What is that? Skin covers the 84 finger body. जोरा आम कहुची चर्म बेढ़ी सीना 84 की ताने आम समस्तंकर शरीर दैर्घ्यता 84 आंगुली। तेणु आमर आपाद मस्तक जो दैर्घ्य रही सेटा चम द्वारा ढांकी होती, चम द्वारा आच्छादित होती। दैट इज द नेचुरल क्लॉथिंग, एंड विथ द नेचुरल क्लॉथिंग, नेचुरल कवरिंग ऑफ क्लॉथ एंड इनसाइड द रिब्स आवर हार्ट्स आर बीटिंग। आमर जो शरीर को चमड़ा आच्छादित करिछि, आमर पंजरास्थि भितर रही जाइछि हृदय जोटा कि स्पंदित होउछि। तेणु से पंजरा भितर पंजरा को घोड़े रखि चर्म आढ़ुआड़े हार्ट कौन करुच्ची ना कपड़ा घोड़े ढोल भाया ढाऊ ढाऊ हो बाजुची, बीटिंग करुच्ची। व्हाट एवर बीटिंग? जस्ट लाइक फंडाल मार्चेस टू द ग्रेव व्हेन ए पर्सन passes away. The relatives, the near and dear ones, carry the dead body of that person to the crematory ground. And sometimes we see there is the play of music, singing of Ram Nam Satya Hai, beating of drums, covering the drum with a cloth so that the sound will be deadly, it will be grave. साधारणतः कौन गोटे शव शोभा यात्रा फनल मार्च रे आम देखते गोटे ढोल को कपड़ा द्वारा आच्छादित करा जाए। ढोल को आघात करने द्वारा से साउंडटा टिके माने माने दुखदायक भय संचारक गांभीर्यपूर्ण होता है। सिमिलरली आवर हार्ट्स मे बी वेरी स्ट्रांग, may not have any defect,
they are incessantly, continuously striking, they are pulsating, they are beating, and the beating of our heart is taking us to our ultimate reality, that is death. आमर जो हृदस्पंदन जोटा कि जन्म हवा आगुरी चली से हृदस्पंदन कौन करुच्ची ना आमर शबर शोभायात्रा करुच्ची अर्थात आमको मृत्यु आड़ को टाणी जाऊँ. इन द नेम ऑफ लिविंग वी आर मार्चिंग टुवर्ड्स आवर डेथ. बंचिबा ना रे आमे समस्ते कौन करुछंती ना समस्ते होउछंती मृत्यु पथर यात्री. वी आर जस्ट लाइक डेड बॉडीज टेकन टू द क्रिमेटोरी ग्राउंड. तेणु आमको मन पड़ो एट एनी टाइम एनी मोमेंट वी मे पास अवे. आमको मन पड़ो टाइम इज नॉट वेटिंग फॉर अस, दैट वी हैव नॉट कंप्लीटेड आवर वर्क एंड द टाइम मस्ट बी वेटिंग फॉर अस. आम मन पड़ो आम काम सारी थाउ कि न सारी थाउ समय आमको अपेक्षा करिवो नाही. आमको समय अपेक्षा करिवो नहीं, मृत्यु अपेक्षा करिवो नहीं. आउ कोन ना ये जो संक्षिप्त समय भितर अल्प दिन भितर क्षीण आयुष भितर वी हैव टू क्रिएट समथिंग लॉन्ग लास्टिंग. ओके, नाउ कम टू द स्टांजा 5. नाउ इन द स्टांजा 4 we got the simile, indirect comparison, the comparison between the hat and the muffled drums. And come to the next stanza, stanza 5. In the world's broad field of battle, in the bivouac of life, you see different poets compare life with different things. विभिन्न कवि जीवन को, दुनिया को विभिन्न जिनिस सहित तुलना करिसेंती. जरा हम कहते संसार सिंधु रूपेण. सम पोएट्स कंपेयर दी वर्ल्ड विथ ए सी, and in this poem too you will find the comparison of the journey of life across the sea, just like a voyage. And in this particular line the poet compares this vast world, a broad world, with a broad wide vast battlefield. ए धाड़ी रे कवि कौन करुछंती ना सारा विश्व को, सारा पृथ्वी को गोटे विस्तृत रणांगन सहित युद्ध पड़िया सहित तुलना करिछंती. एंड हियर वर्ल्ड्स ब्रोड फील्ड ऑफ बैटल, वर्ल्ड इज पर्सोनिफाइड. एठी मानवायन कराइछि. वर्ल्ड को एक व्यक्तिर रूप दियाहिछि. आज इफ दिस the vast field is just like world's battlefield. सारा विश्व द सरफेस ऑफ द अर्थ सेरा होची पृथ्वीर गोटे रण पड़िया, युद्ध पड़िया. एंड व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज जस्ट लाइक ए bivouac, फेंस स्टॉर्म, टेम्पररी कैंप. एंड इफ यू हैव सीन द महाभारत, that is serial, you might have seen the fighting between the Kauravas and Pandavas, setting up their camps in the great battlefield called Kurukshetra. आमे महाभारत सीरियल देखछंदी जोथरे कि कौरव और पांडव माने निज घर ठारू दूर रे कुरुक्षेत्र पड़िया रे सब शिविर पकई के टेंट पकई सब रही. So long the war was going on, they were there, they were resting there, they were eating there, and they were planning their next day's fight. So एठी life is just like a temporary camp. That means we are not here for a permanent. आमे पृथ्वी को चिरदिन पई आसी नांती. It is our temporary abode. And some people say, some poets say, some hermits say that we have to consider this body just like the house of a host. आमे शरीर को बंधुघर भाविबा. आज if we have gone to some relatives house and we cannot stay there for long time, तेणु ये कौन होची our life is short, just like the short setting of camps in the battlefield. जेमिति युद्ध पड़िया रे सैन्य माने सामूहिक भाव में तंबू टाणी था,
सेमती ए पृथ्वीर रणांगन युद्ध पड़िया मनीष जीवन हूँ गोटे सामयिक क्षणस्थायी गोटे टेंट बुभुआ बी नॉट लाइक डम ड्रिवेन कैटल यू सी एंड when we are talking about the battlefield, when we are talking about our life just like a camp, what are we? We are just like fighters, we are just like warriors, just like soldiers. जीवन युद्ध क्षेत्र रे आम समस्ते जड़े जड़े योद्धा जड़े जड़े सैनिक एंड when we are here playing our role just like a fighter, just like a soldier, according to Shakespeare, the fourth stage of man's life is the life of a soldier. That means when we try to struggle, when we try to fight for our survival, for our maintenance, आमर शिक्षा सरिया पर जिते आम चतुर्थ वर्ष पहुँचती आम कौन करती ना जीवन यापन करने संघर्ष करती संग्राम करती विभिन्न कॉम्पिटिटिव परीक्षा फेस करती कॉम्पिटिटिव परीक्षा दियंती तेणु व्हेन वी आर फाइटर्स इट इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए फाइटर फ्रॉम ए सोल्जर टू बी लाइक डम ड्रिवेन कैटल वी शुड नॉट बिहेव जस्ट लाइक कैटल काउ एंड बफालोज आम समस्ते मनीष आम समस्ते जड़े जड़े योद्धा जड़े जड़े वीरपुरुष जड़े जड़े सैनिक आम गाई गोरु भली व्यवहार करने उचित नुहे कि भाया गाई गोरु डम ड्रिवेन means the cows, the buffaloes which are frightened, those who are silenced, muted and those who are guided by others. जो गाई गोरु भीतत्रस्त जो माने डरी जाइथिबे जो गाई गोरु को अन्य माने परिचालित करती ताकू कहा जाए डम ड्रिवेन कैटल. And we are human beings, we should not be guided by others, we should not be chicken-hearted, we should not be frightened, terrified, horrified, and we should not put our mouths closed. Rather, instead of behaving just like a cattle, we have to behave just like a hero in the strife, in the struggle for survival. जीवन संग्राम रे आम समस्त को गाई गोरु भली व्यवहार नकरी समस्ते तुनी है साइलेंट है चुपचाप रहिबा ठीक होगा नहीं बरং आम कौन करवा ना समस्ते गोटे गोटे हीरो हवा. द मेन कैरेक्टर इन एनी ड्रामा एनी फिल्म इज द हीरो. सिमिलरली इन द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल वी हैव टू टर्न आउट टू बी द मेन कैरेक्टर्स द ब्रेव फाइटर्स. आम समस्ते जीवन संग्राम रे आम वीरत्व प्रदर्शन करवा समस्ते मुख्य भूमिका निभेबा आम समस्ते हीरोर माने पार्ट रोलटा प्ले करवा. ओके दैट मीन्स वी हैव टू एक्सेप्ट चैलेंजेस इन लाइफ. वी शुड नॉट बी फ्राइटेंड, वी शुड नॉट बी स्केयर्ड बाय डिफरेंट सिचुएशंस. We have to face different situations, different problems and tackle them so that we can turn out be victorious. आम यदि समस्त झड़ झंझा बाधा विघ्न जहाँ समस्या अच्छी सबुड़ी को सीधा सड़क आम सम्मुखीन हवा ताले जीवन संग्राम रे आम समस्ते गोटे गोटे वीर पुरुष जड़े मुख्य चरित्र ही अवतीर्ण हो पारिबा. ओके नाउ समटाइम्स some of us are fatalists and some people ruminate over the past. Now what to do in case we have no courage? Suppose we try to lead a life of comfort and luxury. मन कर जाऊ बेले बेले आम भाविबा किए कष्ट करुची चला आराम रहिबा मो भाग्य भल मो भविष्य भल मोर अतीत भल थिला. And what the writer says about the past, present and future. Let us see. बर्तमान कवि आमको अतीत वर्तमान भविष्य विषय कौन कहते आम टे एग्जामिन करवा सो दैट विल बी मोर एनर्जेटिक मोर एक्टिव and will gather more pluck.
trust no future, however pleasant. You see, sometimes we are daydreamers. We dream about our future. We think, we believe that our future is very bright. Future is joyous. We have no worries. We have nothing to worry. बेले आम भावती मोर भविष्य तो उज्ज्वल, मोर कि चिंता करिवार नाही. But the poet says, trust no future. Don't have confidence on your future life. भविष्य तो उपरे दृढ़ आस्था प्रकट कर नाही, भरोसा कर नाही. कहीं nobody has seen tomorrow. कौन सी व्यक्ति आसंता काली देखी नाही. सो फार आज पर्यंत कौन सी व्यक्ति टुमरो बा आसंता काली देखी नाही. Therefore, don't have a faith, don't have a trust, don't have confidence on your future life, future career, future prospects. Okay? Trust no future, however pleasant. Let the dead past bury its dead. You see, past, present and future all are personified. भविष्यत अतीत एवं वर्तमान को कवि सब मानवायन कर मनीष दृष्टि गणना कर. Therefore, future, past and present are written in capital letters. Okay? Suppose we don't trust in future. Should we trust in past? आम अतीत भविष्य को आम भरोसा करवा नहीं. भविष्य जिते आनंददायक हो पछे आम तो गुरुत्व दबा नहीं. ताले कौन करवा? अतीत को निर्भर करवा. लेट द डेड पास्ट. पास्ट इज डेड. टाइम पास्ट. टाइम गन इज गन फॉर एवर. जो समयटा अतिबाहित हो जाए पास्ट टाइम. गोटे लोक अतिबाहित हो गले, लोक चलीगले, आम कहते हि हैज अ पास्ट अवे, तमाने हि इज डेड. पास्ट इज डेड. अतीत मृत. And that dead past, let the dead past give a tomb to its past things. That means let bygone be bygone. Don't ruminate over past things. You may have a glorious past, you may have a painful past, but don't think about the past. अतीत को तार अतीत जिनिस को समाधि देवाई छाड़ी दिया जाओ. तामाने अतीतटा को अतीत रखा जाओ. डोंट गिव लाइफ टू दी पास्ट. आम अतीत को जीवन्यास दवा नहीं. तामाने वी शुड नॉट थिंक एगेन एगेन अबाउट द पास्ट. वी शुड नॉट ड्रीम अबाउट द फ्यूचर, प्लान अबाउट द फ्यूचर. आम भविष्य योजना करवा नहीं. अतीत विषय को भाविबा नहीं. दीज आर टू फ्यूटाइल थिंग्स, मीनिंगलेस थिंग्स, यूजलेस थिंग्स. अतीत को भाड़ा, भविष्य को स्वप्न देखा, ये दुईटा संपूर्ण व्यर्थ निरर्थक जिनिस. रहा कौटा? पास्ट इज डेड, फ्यूचर इज अनबर्न. अतीत मृत, भविष्य जन्म नहीं. रही कौटा? act in the living present. Present is living. One has not taken birth, the other has died. गोटे जन्म नहीं ना, फ्यूचर जन्म नहीं ना, अतीत मरीगला. बंचीज कौटा? प्रेजेंट. टाइम प्रेजेंट. टाइम ऑफ स्पीकिंग इज लिविंग. कहूवा समयटा सेटा ही बंचीज. आउ से समय आम कौन करवा? इन द लिविंग प्रेजेंट, व्हेन वी आर लिविंग एंड ब्रीदिंग, at that time, instead of thinking about the past and the future, what should we do? We should act and act. तेणु जो समय आम बंची, जो समयटा आमर आयतर अच्छी, से समय आम अतीत कि भविष्य विषय चिंता नक कर्म करवा. act in the living present. The word act is repeated. That means we have to go on working. Whatever work, the work which will create some long lasting things,
which will create some long lasting impact on the minds of people, which will outlive us. That type of work will be done at the time present. आमे की प्रकार काम करिबा जो समय बंचिसंती जो समयटा आम हाथ रे अछि से समय को आमे आइडियल वे न करिकी नष्ट न करिकी वर्तमान समय को नष्ट न करिकी कोन करिबा किछि काम करिबा जो कामटा कोन करिवो ना आम मोला परे मध्ये थिबो आर्ट इज लॉन्ग ओके act in the living present, heart within and God overhead. Heart within and God overhead while working. According to Gandhi, hate kam mukhe ram. While working, we have to pray God, take the name of God. Why? God does not give us anything. हमको भगवान किसी दियंती नहीं किंतु आमे भगवान कर नाम कहीं नबा काम करुथिबा नाम नौथिबा कहीं ना बिकॉज इन केस देयर इज फेल्युअर व्हेन देयर इज फेल्युअर वी विल नॉट बिकम फ्रस्ट्रेटेड विल नॉट बिकम डिसहेartened बिकॉज द नेम ऑफ गॉड विल इंस्पायर अस द नेम ऑफ गॉड विल गिव अस सोलेस द नेम ऑफ गॉड विल bring us boldness, courage, reliance, dependence. आमे यदि ईश्वर नाम नौथिबा काम कला बेले तले कौन हम ना आमे कौन फेल्युअर हेले भांगी पड़वा नहीं हताश हवा ना कहीं ना वी हैव ascribed the work to God, we have left the result of the work to God. आमे ईश्वर को समर्पण कर देथिबा कर्म तेणु सी तार फलटा किसी खराब हेले आम दुखित हवा नहीं हतोत्साहित हवा नहीं से कहुच्छी हार्ट विदिन हाव बोल्डनेस हाव करेज इन वर्किंग एंड एट द सेम टाइम वी हैव टू रिसाइट द नेम ऑफ गॉड वी हैव टू टेक द नेम ऑफ गॉड यू सी व्हाई डज द पोएट गिव एम्फासिस टू द प्रेजेंट टाइम नाउ with a small anecdote, small story of the 10-headed demon Ravan, I am going to conclude the discussion. What is that? Ravan lived for 672 years according to our mythology. रावण आमर जो रामायण अनुसार 672 वर्ष बंचिले but nowadays maximum we live up to 120 years. Ravana had confidence that one day he would build a ladder to the heavens. तार गोटे दृढ़ विश्वास थिला at any time any moment giving an order to विश्वकर्मा he can build a ladder to the heavens. लंका लोक मानक स्वर्ग को जीवा पई गोटे निशुणी गोटे स्टेयरकेस तैयारी कर पारे बोली तार दृढ़ विश्वास थिला तेणु से कौन करे ना आई विल डू इट मुझे करदेवी कहीं भाई कौन अर्डर दे सागे से द डेमन किंग लिव फॉर 672 years बट ए सिंगल वर्क स्मॉल वर्क व्हिच कुड हैव बीन कंप्लीटेड विद नो टाइम गिविंग एन ऑर्डर टू विश्वकर्मा दैट वर्क कुड नॉट बी कंप्लीटेड बाय रावण इन हिज लाइफ टाइम ऑफ 672 years जो रावण 672 वर्ष बंचिला टिके ऑर्डर देथिले विश्वकर्मा सांगे सांगे स्वर्ग को निशुणी करता लंकारु किंतु से कामटा से करि पाले नै काहे कि बिकॉज शी बिलीव्ड इन फ्यूचर आई विल डू इट आई कुड डू आई विल डू अतीत रे मु एटा करि पारिछि भविष्यटा करिवि तेणु थिंकिंग अबाउट द पास्ट एंड फ्यूचर ruined his present तार अतीत तार भविष्यतर जो गर्व अहंकार तार वर्तमान को नष्ट करदेला गोटे छोटिया काम से कर पाला नहीं तेणुक वी हैव टू मेक द हे व्हाइल द सन शाइन्स सो लॉन्ग वी हैव एनर्जी वी हैव कैपेसिटी वी हैव द डिजायर वी हैव द विल पावर वी हैव द स्ट्रेंथ लेट अस पुट आवर 100% to the work we are doing so that the work will be durable, long lasting, and through our work
people will remember us even after our death. Okay, तो आमे ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେମିତି ଖରା ପଡ଼ିଥିଲା ବେଳେ ଆମେ ନଡ଼ା ପାଳ ଶୁଖେଇ ପାରିବା, ଘାସ ଶୁଖେଇ ପାରିବା, ବର୍ଷାରେ ଶୁଖେଇ ପାରିବାନି, ସେମିତି ଆମର ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆମେ ସେହି ସମୟରେ ଯାହା କିଛି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ସେଭଳିଆ କାମ କରିବା। ଆମେ ମଲା ପରେ ସେଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତି ହେଇ ରହିଯିବ, ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ରହିଯିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍ ଫର୍ listening to the audio. Thank you.